the pathways of the OCD and other was sleep disorders. So whenever I'm trying to make the MCQs, I'm just thinking about it कि कितनी चीजें accommodate हो सकती हैं. Obviously, questions तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मुझे लिमिट रखना है 15 क्वेश्चंस एक पे, क्योंकि हम एक घंटे में नॉन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ओनली वी कैन अटेम्प्ट 10 and scenario based questions we can attempt 15. Same goes in the exam as well. The scenario based questions takes a longer time. Non-scenario based questions takes a relatively shorter time. So it depends. अब जो पिछली दफा भी बात हो रही थी कि उन्होंने TOS की बात की, तो वो उसमें भी सिनेरियो है और उसके नीचे 5 MCQs हैं. So it's relatively in between the time. बिकॉज सिनेरियो आपको एक दफा पढ़ना है, लेकिन MCQs उससे रिलेटेड 4 या 5 हो सकते हैं. सो इट्स रिलेटिवली इजियर. Anyways, a scenario is a 24-year-old man presents with intrusive thoughts about contamination and spends hours washing his hands daily. He recognizes these thoughts as irrational but feels unable to resist them. Neuroimaging studies in patients with this condition most consistently show dysfunction in which of the following neural pathways? I don't think so. It's a difficult question. A, mesolimbic dopamine pathways, nigrostriatal pathways, CSTC, corticostriatal-thalamocortical loop, Pappas circuit, and spinothalamic. What is the correct answer? C. Good. C is the correct answer. I told you it's not, oh, sorry. C, it's not a very difficult question, so it's relatively easier. Most of the candidates are able to respond to it. A patient with OCD undergoes functional neuroimaging which shows increased activity in orbitofrontal cortex. Orbitofrontal cortex is the same as in the previous question, CSTC. This region primarily projects to which structure as part of the OCD patch circuit? Hippocampus, caudate nucleus, substantia nigra, pars compacta, amygdala, and cerebellar vermis. So CSTC and orbitofrontal cortex in OCD, which is the main component, primary projection from it. This is moderate difficulty. Hippocampus, caudate, substantia nigra, amygdala, cerebellar vermis. Hanji. C. Oops. One more try. Caudate, sir, B. Yes, caudate nucleus is the right answer. Motor component of the OCD is involved because of the caudate. So, उसके साथ relationship है. CSTC, orbitofrontal cortex, caudate nucleus. These are the main areas in OCD. Next, a 35-year-old man with severe OCD does not respond to multiple SSRIs or cognitive behavior therapy. And this is a usual thing. Most of the time when the patients comes to the clinic, this is what happens. We try SSRI, we try CBT. Even then, sometimes people don't get better. He undergoes deep brain stimulation targeting part of the CSTC circuit. Which structure is most commonly targeted to interrupt this pathological loop? Now, this loop in the orbitofrontal cortex called CSTC, which part is used in deep brain stimulation? Subthalamic nucleus, nucleus accumbens, globus pallidus externa, red nucleus, lateral geniculate body. Subthalamic nucleus. Oops. Ek aur try. Shabash. These are difficult because these are not clinical questions. They are specifically related to OCD. OCD, CSTC,
orbitofrontal cortex, caudate nucleus, and now deep जब ब्रेन स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो किस जगह को टारगेट करते हैं? Anybody else? It's basically nucleus accumbens. CSTC, orbitofrontal cortex, then caudate nucleus, and nucleus accumbens is target in deep brain stimulation in resistant OCD. A researcher is studying neurotransmitter imbalance in OCD. In addition to serotonin, which neurotransmitter is most implicated in modulating the CSTC circuit and is a target of augmentation strategies? 1. Acetylcholine, GABA, dopamine, histamine, glycine. Surprisingly, Dopamine. इसमें serotonin नहीं लिखा. Absolutely, dopamine. So when augmentation strategies are used, serotonergic pathways and some of the dopaminergic pathways are targeted. इसीलिए आपने सुना होगा कि जब वो लो डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक देते हैं वो डोपामिनर्जिक पाथवेज को हिट करने के लिए दी जाती है. सो अब 5 चीजें आप याद रखें. Neurotransmitters besides the serotonin is dopamine, nucleic accumbens, caudate nucleus, and CSTC. Okay, in OCD, hyperactivity of direct pathway within the CSTC loop leads to which of the following effects? Hyperactivity of direct pathway, increased inhibition of the thalamus, decreased cortical excitation, increased thalamic stimulation of the cortex, reduced activity in the orbitofrontal cortex, and enhanced cerebellar output. Now again, this is a difficult question. Anybody? Wild guess? B. Oops. एक और try. Shabash. Keep guessing. 5 में A. से एक नहीं, A भी नहीं है. It is C. Increased thalamic stimulation of the cortex. जब CSTC का आप लूप देखते हैं उसमें थैलेमस की बाउंड्री आ रही है. And increased thalamic stimulation of the cortex is the pathway which is targeted. Hyperactivity cause करता है. A 32-year-old man with severe OCD undergoes structural MRI. It shows reduced volume and abnormal activity in caudate nucleus. ये हम पहले बात कर चुके हैं caudate nucleus की. A 32-year-old man with severe OCD undergoes structural MRI. It shows reduced volume and abnormal activity in caudate nucleus. Which is the most likely consequences of this abnormality? 1. Impaired emotional memory consolidation. 2. Failure to filter intrusive thoughts. C. Loss of voluntary motor coordination. D. Reduced pain perception. E. Impaired visual processing. This is not very difficult. OCD का कोई B. रिलेशनशिप मेमोरी के साथ है? सॉरी, वो क्या बोला? एक दफा फिर बोले. सर बी बोल रहे थे, अभी आपने मेमोरी का बोला तो अब ए लग रहा है. नहीं, बी ठीक है. ओसीडी में मेमोरी को कुछ नहीं होता. ठीक है. फेलियर टू फिल्टर इंट्रूसिव थॉट्स इज द आंसर. ओसीडी में वॉलंटरी मोटर कोऑर्डिनेशन को कुछ नहीं होता. रिड्यूस पेन परसेप्शन नहीं होती. इंपेयर्ड विजुअल प्रोसेसिंग नहीं होती. सो अगर आप उस सारे को देखें तो reduced volume and abnormal activity in caudate nucleus. It's the filter of the intrusive thoughts. इसीलिए वो सर्कल में बार बार घूमते हैं. ठीक है. सो ये relatively moderate difficulty का क्वेश्चन है.
A patient with OCD undergoes fMRI, which is functional magnetic resonance, again, MRI, before and after treatment with an SSRI, such as sertraline. After 12 weeks, repeat imaging shows decreased activity in the orbitofrontal cortex because that is the primary area for OCD. This change most likely directly reflects one, increased dopamine release in mesolimbic pathway. Dopamine का role है, we know that. Reduced hyperactivity in the CSTC loop, inhibition of spinothalamic tract, activation of Papez circuit, increased cerebellar modulation. This is not difficult. E option, sir. कौन सा? E, reduce hyperactivity in CSTC. Absolutely. CSTC जो पाथवेज है उसमें एक्टिविटी इनहांस होगी और जब हम दवाई देंगे वो एक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी, ओसीडी में इंप्रूवमेंट आएगी. एब्सोल्युटली. सो दिस वाज नॉट डिफिकल्ट. अगर पीछे सारा देखते जाएं तो आपको रिलेटिवली आसान लगेगा. A research study uses functional connectivity MRI to analyze OCD patients. It shows increased connectivity between orbitofrontal cortex and the thalamus. And we know that this finding is best explained by A, reduced indirect pathway activity. B, increased inhibitory GABAergic outputs from the thalamus. C, hyperactivation of direct pathways. D, degeneration of dopaminergic neurons. And E, increased cerebellar thalamic signal. This is not difficult. C. C, absolutely. Good. अब थोड़ा सा sensibility आनी शुरू हो गई है तो हो जाएंगे. A 19-year-old man is brought to clinic for repetitive behaviors. He has a 5-year history of sudden, brief, non-rhythmic movements involving eye blinking and shoulder shrugging, which worsens with the stress. He reports a premonitory urge that is relieved after performing the movement. Recently, he has also developed some intrusive thoughts about contamination and spends excessive time washing his hands. शुरू हुआ था repetitive movement से, non-rhythmic repetitive movements, और फिर बढ़ता गया. Functional imaging would most likely to show increased activity in cortico-striato-thalamocortical pathways, CSTC, in both conditions. However, the predominant neurotransmitter abnormalities differ between these disorders. Right? Now, this is question. Which of the following best describes the neurochemical effects underlying his two conditions? 1. Both disorders are due to decreased dopamine in nigrostriatal pathways. OCD is due to dopamine excess, while Tourette syndrome is due to serotonin deficiencies. OCD is primarily associated with serotonin dysregulation, while Tourette syndrome involves dopamine excess. Both disorders are caused by GABA deficiency in thalamus. OCD involves glutamate deficiency, while Tourette involves acetylcholine excess. This is again not a difficult question. Answer. C. Nine. OCD is primarily associated with serotonin dysregulation? No. While Tourette syndrome involves dopamine excess? Is it? C? Confused क्यों हो रहे हो? Yes, C है. OCD is primarily involved with serotonin dysregulation, while Tourette syndrome involves dopamine excess. इसीलिए Tourette syndrome में usually you use low dose of antipsychotics, तो वो Tourette syndrome को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, और SSRIs का रोल OCD में है और उससे मूवमेंट्स भी बेहतर होती हैं. Next question. A 17-year-old boy has a history of motor and vocal tics since childhood. He now develops intrusive thoughts about harming others
and begins repetitive checking behaviors. He started on fluoxetine, which improves his intrusive thought but worsen his tics. Which of the following is the best next step in the management? Now, this is again not a very difficult question. Fluoxetine increase, adding haloperidol, switch to tricyclic, add a benzo, start a lithium. Add haloperidol. Absolutely. और इसकी बात हम पीछे कर चुके, इसलिए आपका वो सर्कल अब ओसीडी के पाथवेज का relatively सिक्योर हो गया. A researcher is comparing neurotransmitter activity in patients with OCD and Tourette syndrome. She notes that both disorders involved CSTC circuit dysfunction but differ in dominant neurotransmitter tone. Which of the following changes is most likely to be seen in Tourette syndrome compared to OCD? Now, decreased serotonin activity in orbitofrontal cortex, increased dopamine activity in the striatum, decreased glutamate release from thalamus, increased GABA inhibition of the cortex, decreased norepinephrine in locus ceruleus. Not a difficult question. B. The B option. Absolutely, absolutely. Good. Shabash, pick up ho gaya. A patient with severe OCD and comorbid Tourette syndrome is treated with an SSRI and later augmented with risperidone. His symptoms improved significantly. The benefit of risperidone in this patient is most directly due to which effect? One, increased serotonin reuptake inhibition, dopamine D2 receptor antagonism in the striatum, activation of GABA A receptors, inhibition of norepinephrine release, increased acetylcholine at neuromuscular junction. मुश्किल नहीं है. B option है sir. D2 antagonism. Absolutely. Good. So ये hopefully आपके pathways cover हो जाएंगे आज सारे. A 15-year-old boy repeatedly taps his desk exactly 5 times before writing. He reports that he feels an internal urge that is relieved after tapping. He denies fear of intrusive thoughts. Symptoms worsen when he is anxious. Which of the following is most likely underlying neurochemical abnormality? Serotonin deficiency in orbitofrontal cortex, dopamine excess in basal ganglia, GABA deficiency in cerebellum, acetylcholine deficiency in cortex, and glutamate deficiency in hippocampus. Not a difficult question. A. C. No. It's B. B. Dopamine excess in basal ganglia. Yes. क्यों? ऊपर से आप कनेक्ट करें. मोटर कंपोनेंट इन्वॉल्व है, बेसल गैंग्लिया रिलेटेड है, कॉर्डेट और पुटामेन की इन्वॉल्वमेंट है. Study administered two drugs. Drug A, SSRI. Drug B, dopamine receptor antagonist. Which pattern of symptom improvement is most likely? Drug A, OCD. Drug B, Tourette. कौन से बेहतर हो जाएंगे सारे symptoms? OCD improves with A, Tourette improves with B. दो दवाइयां. A, SSRI. B, dopamine receptor antagonist. OCD improves with B, Tourette improves with A. Both improve with A only. Both improve with B only. Neither improves either. A यहां से. A SSRI है, B डोपामीन है. आंसर क्या होगा? OCD किससे ठीक हो रही है और टूरे किससे ठीक हो रहा है? A से सर. A. A. B नहीं है. OCD improves with dopamine receptor antagonist and Tourette improves with SSRI. के A है. A है sir. Okay, ठीक है. Okay, a 42-year-old man is brought to the clinic by his wife because of unusual nighttime behaviors. About 2-3 hours after falling asleep, he suddenly sits up. Now, OCD is done. We have covered them. I will be covering now the sleep disorders.
A 42-year-old man is brought to the clinic by his wife because of the unusual nighttime behaviors. About 2 to 3 hours after falling asleep, he suddenly sits up, appears terrified, and screams. His eyes are open and he is sweating heavily. Attempts to wake up him are unsuccessful, and he becomes confused and agitated if restrained. Next morning, he has no recollection of the event. Polysomnography would most likely show these episodes arise from which of the following stages of sleep? Stage 1, Stage 2, Stage 3, या sleep wake transition. B. No. इसके बारे में लतीफा भी मशहूर है ना, डॉक्टर साहब के पास लेके गई D? खातून. बी बी पहले भी बोला, बी अभी भी बोला. D. Sir, D. डी रैम साइकिल में ये नहीं होता. सी है सर. हाँ सी है. ओके, वो लतीफा ये है कि वो खातून अपने मियाँ को लेके जाती है कि जी रात को सोते हुए फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और वो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें तो डॉक्टर साहब उसको दवाई देते हैं, ये आज रात को खिला दें, ये ठीक हो जाएगा. वो कहते हैं डॉक्टर साहब आज मैं दवाई नहीं खाऊंगा, आज तो फाइनल मैच है. सो समटाइम्स पीपल डू. अगेन इसमें आप जो 5-6 चीजें आप देखें कि ये है क्या. appears terrified, screams, sits up, eyes are open, sweating heavily. So ये night terrors की situation है, और night terrors stage 3 of the sleep में आते हैं. Right? Okay. A 9-year-old boy is brought in for repeated nighttime episodes about 1 to 2 hours after falling asleep. He sits up screaming, appears terrified, pushes his parents away. When they try to comfort him, he is difficult to rouse and has no memory of the event in the morning. It's similar to the previous one. Neurological exam is normal. What is the next best step? Order overnight EEG. This is one, right? Second question is Mahanur. Okay, she disappeared. What is next best step? Order overnight EEG, start clonazepam, reassure and educate parents, start anti-epileptic therapy, schedule polysomnography. क्या जवाब? 9 साल का बच्चा है, रिपीटेड नाइट टाइम एपिसोड्स हैं, 1 से 2 घंटे के बाद he sits up screaming, appears terrified, pushes his parents away. When they try to comfort him, he is difficult to rouse and has no memory of the event in the morning. What is the next step? सी सर. Very good. Reassure and educate the parents. Usually, straight away, हमारे डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं, नहीं लिखनी. Polysomnography अगर reassure and education of the parents के बाद ना काम कर रही हो, then you have to go for an EEG, overnight EEG or polysomnography, and then intervene, not before that. A 68-year-old man is reported by his spouse to act out his dreams, including punching and kicking during the sleep. These episodes occur in the early morning hours. Now, this is different than the previous one. He recalls vivid dreams when awake. Vivid, very clear. What is happening? मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दरख्त से गिर रहा हूं, मैं आसमान में फंस गया हूं. What is the next best step? Reassurance only. Start melatonin or clonazepam. Prescribe an SSRI. Order a brain MRI immediately. Start antipsychotic medication. B. B, very good. B कैसे? पिछले वाले में हमने कहा था reassure करें, यहाँ हमने straight दवाई शुरू कर दी. What's the difference? This is REM sleep disorder. Okay. और REM sleep disorders में reassurance काम नहीं करेगी. सर वो स्लीप का स्ट्रक्चर सही नहीं है, सो Okay, चल, that's absolutely sensible. Plus age, plus acting out his dreams, plus vivid dreams. So yes, this is different than the previous situation. Here you will start a treatment.
Melatonin usually is used. डोज पता है किसी को कितनी देते हैं? ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल है. सर 2 और 3 से स्टार्ट कराते हैं. If it doesn't और work, then कहां can तक we जा do सकते हैं? 10? 12 मिलीग्राम्स तक सेफली जा सकते हैं. और यूजुअली मेलाटोनिन एक्ट्स बेस्ट if it is given 3 to 4 hours before going to bed and it is taken with food. So ये याद रखें. मेलाटोनिन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. खाने के साथ देनी है, खाली पेट नहीं दे सकते, सोने से पहले नहीं देनी, 3-4 घंटे पहले देनी है. A 22-year-old student reports excessive daytime sleepiness despite adequate sleep. He describes sudden episodes of muscle weakness triggered by laughter. He also experiences vivid hallucinations when falling asleep. अब 4-5 चीजें. Excessive daytime sleepiness. 2, muscle weakness triggered by laughter. Experiencing vivid hallucinations when falling asleep. What is the next best step to confirm the diagnosis? Start modafinil, order overnight polysomnography, prescribe melatonin, order CT brain, or start an SSRI. A, sir. B. Good. Overnight polysomnography followed by multiple sleep latency test. This is very unfortunate. We have sleep clinics here where people go sleep and get their nighttime EEG and it is done. Chota sa shahar hai, but there are 2 centers where this is done. Lahore is a big city, and unfortunately, neither the physician refers for polysomnography nor it is available. Is it available anywhere in the bigger cities? Anybody? I don't know. Honestly, I feel that I'm strangled when I'm fighting for these things. But sleep studies are very difficult to get ordered So I've and heard carried on. Shifa में होती है. इस्लामाबाद में Yes, sir. अब मैं अपने मरीज को लाहौर से इस्लामाबाद भेजूं स्लीप स्टडी के लिए. Not a bad idea, बस if अगर होती है तो let me know surely. Okay. A 52-year-old obese man reports daytime fatigue and loud snoring. His partner reports episodes where he stops breathing during the sleep. Blood pressure is elevated. What is the next best step? Start zolpidem, recommend weight loss only, order overnight polysomnography, start CPAP immediately without testing, prescribe a benzo. Not a difficult question. ये डायग्नोसिस क्या है? सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप Sleep एपनिया. apnea. एब्सोल्युटली. तो फिर करेंगे क्या? B. वेट लॉस नहीं करवाएंगे पहले? क्या करवाएंगे? वेट लॉस. जरूरी नहीं है वेट कि लॉस. ओबेसिटी के सर साथ ही पॉलीसोमनोग्राफी करवाएंगे. पॉलीसोमनोग्राफी कराएंगे. एब्सोल्युटली. जरूरी नहीं है कि स्लीप एपनिया obesity से related हो. Yes, in majority of the situation, yes, but it's not a compulsion. Even thin people, they can have sleep apnea. जो टिपिकल प्रेजेंटेशन वो बता रहे हैं कि लाउड स्नोरिंग है, डे टाइम स्लो फटीग्ड है, और फिर वो पार्टनर रिपोर्ट करता है कि एपिसोड्स जहाँ पे सांस रुक जाती है कुछ देर, खराटे आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, फिर सांस रुक जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा से खराटे आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, फिर सांस रुक जाती है. सो ये टिपिकल स्लीप एपनिया की प्रेजेंटेशन है. पोलीसोमनोग्राफी इज द आंसर. A 19-year-old woman reports episodes when waking where she is unable to move and feels a presence in the room. सोते हुए एकदम उठे और कुछ कमरे में लगा कोई है. She is fully aware during these episodes. No daytime symptoms are reported. What is the next best step? Start antipsychotic, diagnose schizophrenia, reassure patient, order EEG, start an SSRI. C. C. Young person having symptoms. What are these hallucinations called? Hypnopompic. Good.
So reassurance is the best answer because it's a normal phenomenon. It can happen in a number of the situations. So you just reassure them. Dawai na dein. A 56-year-old man with obesity, hypertension, type 2 diabetes reports excessive daytime sleepiness and loud snoring. His partner notes frequent apneic episodes. So sleep apnea ho gaya. Polysomnography confirms moderate obstructive sleep apnea. He asks for a sleeping pill because he can't fall asleep. What is the next best step? Start Zolpidem, initiate CPAP therapy, prescribe benzos, recommend alcohol, chuski lao to saan jao. Refer for tonsillectomy. Not a difficult question. B. Yes. Have you ever prescribed a CPAP machine to your patient? Any one of you? Yes, sir, we did in our hospital recently. Acha. I do, yes. Every month or so, एक आधे को जरूरत पड़ती है. Now, the CPAP machines are not a very expensive machines. So now they are automatic. They don't need to be monitored. But of course, they cost. So this is a best possible option that if you suspect the person is having sleep apnea, the investigative facilities are not possible. If you can afford, then you can try it. A 24-year-old woman with confirmed narcolepsy, MSLT positive, reports persistent daytime sleep attacks despite good sleep hygiene. She recently had a minor car accident after falling asleep at the wheel. What is the next best step? Reassurance, modafinil, benzodiazepine, polysomnography, melatonin. It's Modafinil, only sir. मिलती है पाकिस्तान में. ये नहीं पता. ब्लैक में मिल जाती है सर. मिलती है नहीं तो लिखोगे कहां से? Answer is correct. Yes, the treatment is modafinil. But is it available in Pakistan? I don't think so. I have never heard that modafinil is available in Pakistan. But the correct answer is modafinil. A 70-year-old man presents with violent dream enactment behaviors. He has injured his spouse during the sleep. Neurological examination is normal. What is the next best step? Reassure only. Start melatonin or clonazepam. Start SSRI. Dopamine agonist therapy. Order lumbar puncture. क्या करेंगे? B. गुड. चलो. कहीं कहीं दवाई लिखी जा सकती है. खास तौर पे एज बहुत मैटर करती है. आप देखें जितने एमसीक्यूज जहां पे दवाई शुरू हो रही है उसमें यूजुअली पीपल आर अबव द एज ऑफ 60. सो द स्लीप डिसऑर्डर इज अ मेजर प्रॉब्लम मेरे जैसी एज के लोगों के लिए. सो उस एज में इट कैन बी प्रिस्क्राइब. ओके. A 38-year-old woman reports difficulty falling asleep for 3 months. She lies awake, worrying about the work and finances. She drinks 3 cups of coffee daily and uses her phone in the bed. No medical conditions. What is the next step? Zolpidem, SSRI, CBT1, start benzodiazepine, order polysomnography. C. CBT1. Very good. Asan MCQs. A 60-year-old man with resistant hypertension on 3 medication reports fatigue and morning headaches. Very common. BMI is 634 kilogram meter square. What is the next step? Add fourth antihypertensive. Order renal artery Doppler. Screen for sleep apnea and polysomnography. Diuretic recommended exercise only. E. D. Diuretic E. Exercise. recommended exercises only. नहीं काम करेगी. एज C. देखें 60 साल का. सी
screen for polysomnography and sleep apnea. एज बार बार कह रहा हूं एज देखें, ठीक है, उसके हिसाब से अपने एमसीक्यू को टारगेट करें. 6-year-old child is brought in for repeated nighttime screaming episodes. The child appears terrified, cannot be awakened, and has no memory in the morning. Parents are worried about psychological trauma. What is the next best step? Report suspected abuse, start clonazepam, order EEG, reassure parents, refer to psychiatry. Reassure, sir. एब्सोल्युटली. बच्चा है, रीएश्योरेंस पहले आएगी, ठीक है. एडल्ट होता फिर मैं कुछ और सोचता. A 58-year-old man with obesity and resistant hypertension presents with excessive daytime sleepiness and morning headaches. His wife reports loud snoring and pauses in the breathing at the night. Polysomnography confirms moderate disease. After initiating appropriate first-line therapy, which is the following outcome is the most likely over the time? Worsening hypercapnia, increased risk of arrhythmias, reduction in blood pressure, development of central sleep apnea, increased daytime somnolence. Anybody? Moderate difficulty. A. Worsening hypercapnia? No. आपने मशीन लगा दी है, उसको कंफर्म हो गया डायग्नोसिस. फर्स्ट लाइन थेरेपी है सीपैप मशीन, वो आपने दे दी है, फिर क्या होगा? सीपैप मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, रात को अब सो रहा है और स्लीप एपनिया ठीक हो गया है. तो इन पांचों में से क्या चीज हो सकती है? हाइपरकैपनिया, एरिथमिया, ब्लड प्रेशर रिडक्शन, स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और डे टाइम सॉम्नोलेंस. C इनमें सर. से सी. वेरी गुड. नहीं, सी. सारी चीजें सही हो रही हैं, बुरी हैं, एक चीज अच्छी है. जब स्लीप एप मशीन यूज करते हैं तो हाइपरकैपनिया करेक्ट हो जाता है, एरिथमियाज बेहतर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया इंप्रूव हो जाता है और डे टाइम सॉम्नोलेंस खत्म हो जाती है. आप ज्यादा फ्रेश और एक्टिव होते हैं बिकॉज रात को आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सेचुरेशन बेस्ट हुई होती है. सो जब आप रात को सो रहे हैं, स्नोर कर रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं, सीधे सो नहीं सकते, थिंग्स लाइक दैट, मशीन गिव्स यू पॉजिटिव प्रेशर, आपकी ऑक्सीजनेशन ब्रेन की अच्छी रहती है सारी रात, सुबह उठते हैं आप फ्रेश होते हैं, बीपी लोअर डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां आमतौर पर रिड्यूस हो जाती हैं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर. A 72-year-old man is brought for violent movements during sleep. He often punches, kicks while dreaming, recalls vivid dreams afterward over the past year. He has developed a resting tremor and slowed movement. What is the most likely underlying diagnosis? Alzheimer's, Parkinson's, Huntington's, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis. A 72-year-old, huh? A सर. अल्जाइमर्स. अल्जाइमर्स का ऑनसेट आमतौर पे 55 से 65 के दरमियान हो जाता है और अल्जाइमर का पेशेंट जो है पंच और किक करेगा और फिर सुबह ख्वाब भी बताएगा आपको कि विविड ड्रीम्स आ रही हैं और 1 साल से हो रहा है और रेस्टिंग ट्रेमर और Par- स्लोड मूवमेंट्स हो गई हैं. Parkinson, sir. पार्किंसंस डिजीज है बिकॉज वो जो चीजें पीछे चल रही थी वो वर्सन हुई हैं रेस्टिंग ट्रेमर और स्लोड मूवमेंट से. थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट यस इट इज ट्रिकी. ओके जी, दो और. अ 40-year-old woman reports 4 months difficulty falling asleep.
She lies awake worrying about work and finances. Use ये तो हो गया. Okay. 16-year-old boy has a history of motor tics and vocalization. He now develops intrusive thoughts and repetitive hand washing. He is started on fluoxetine, which improves his obsessive symptom but worsens his tics. What is... हम ऊपर तो नहीं चले गए. हाँ, sorry. मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया. Which of the यहां से शुरू करते हैं. A 34-year-old man undergoes all overnight polysomnography due to excessive daytime sleepiness. During one recorded episodes, the EG shows low amplitude, mixed frequency activity with rapid eye movements. Low amplitude, mixed frequency activity with rapid eye movements. There is a complete skeletal muscle atonia, and the patient's heart rate and breathing is irregular. When awakened during this period, he reports vivid dream recall. Which of the following additional findings is most consistent with this stage of sleep? Sleep spindles and K complexes, high amplitude, low frequency delta waves, increased sympathetic tone with preserved muscle tone, predominant parasympathetic tone with regular breathing, presence of alpha waves with closed eyes. Difficult question. हाँ जी, anybody? Wild guess? B, sir. नहीं, भी नहीं है. 34 साल का है, पोलिसोमनोग्राफी हो गई है, डे टाइम स्लीपीनेस है, लो एम्पलीट्यूड मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी विद रैपिड आई मूवमेंट, सो रैम साइकिल का प्रॉब्लम है, मसल एटोनिया, हार्ट रेट और ब्रीदिंग इरेगुलर. इस सारे में नीचे जो आ रहा है, इसमें एक तो ईजी की फाइंडिंग्स है. हाँ, इसमें से 3 में ईजी की फाइंडिंग्स हैं. स्लीप स्पिंडल्स, हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स. ये 3 तो आउट हो गए. अब रह गया सी और डी, क्योंकि यहां पे ऊपर जो बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फाइंडिंग्स ईजी उन्होंने पर कर दी हुई है. एडिशनल फाइंडिंग्स इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस स्टेज ऑफ स्लीप. रैम साइकिल की प्रॉब्लम है. सो सी या डी में से एक है, कौन सा होगा? हाँ, D, sir. नहीं. B. पैरासिम्पथेटिक टोन विद रेगुलर ब्रीदिंग. रैम साइकिल में ब्रीदिंग इरेगुलर होती है, और ये ऊपर मेंशन हो रहा है कि ब्रीदिंग्स आर इरेगुलर. सो एक ऑप्शन बचती है सिर्फ, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक टोन विद प्रिजर्व्ड मसल टोन. मसल टोन रिमेन्स नॉर्मल, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, स्वेटिंग हो रही है, हार्ट बीट इरेगुलर हो रहा है, ब्रीदिंग जो है वो डिफिकल्ट हो रही है. मसल टोन रिमेन्स द सेम. सो सी इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि फाइंडिंग ईजी की फाइंडिंग ऊपर उन्होंने दे दी है. लो एम्पलीट्यूड मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी, सो स्लीप स्पेंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस नहीं हो सकते. हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव्स नहीं हो सकती, उससे मैच नहीं कर रही. अल्फा वेव्स नहीं हो सकती क्योंकि सोता हुआ है बंदा, ये आईज क्लोज में आती हैं. एडिशनल फाइंडिंग नहीं है. सो सी और डी बचते हैं. अब सी, सिंपैथेटिक टोन ज्यादा होती है, मसल टोन प्रिजर्व्ड होती है रैम साइकिल में. ये सिर्फ ये आंसर है. गॉट इट? ओके. A 25-year-old man undergoes overnight polysomnography. He is currently in stage characterized by sleep spindles, K complexes on EEG, no eye movements, decreased heart rate and respiratory rate compared to wakefulness, easy arousability. After this stage, what is the most likely sleep stage in a normal sleep cycle? इस साइकिल के बाद कौन सी स्टेज आएगी? N3 sleep, sir. हाँ, N3 sleep, sir. एब्सोल्युटली. N3. क्यों बोला? Sir, N2 के बाद N3 आता है, sir. N3 के बाद क्या आता है?
सर पहले N2 आती है ना, इसमें स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर उसके बाद हाँ, N3 स्लीप आती वेरी गुड। स्टेज 2 में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। इसके बाद क्या आएगा? स्टेज 3 आएगी। वेरी गुड, यू गॉट द क्लिक। A 30-year-old man in his fourth sleep cycle of the night. एक रात में कितनी साइकिल्स होती हैं? 5. EEG shows sleep spindles and K complexes. He is currently in a light sleep stage with no eye movements. What is the most likely stage? ऊपर आपने N3 बोला था, यहां क्या है? वो स्टेज N2 है। N2 है। N2 क्यों होगा? है। यहाँ पे भी सर N3 होना चाहिए। नहीं यार, नहीं। क्या हो गया? तुम लोग सही जा रहे थे, एकदम गड़बड़ होगी। समझो, उसने कहा जी ईजी में स्लीप स्पेंडल्स और की कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, सो वो स्टेज 3 के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ, जैसे यहाँ जैसे पे आप रेम होगा। सोते हैं, हाँ रैम होगा। इसलिए कि जैसे जैसे आप नाइट में पहली साइकिल में आते हैं तो के कॉम्प्लेक्सेस और स्लीप स्पेंडल्स आते हैं, फिर वो टाइम पीरियड शॉर्ट होता जाता है, और चौथी और पांचवी जब साइकिल चल रहा होता है ना स्लीप का रात को, उसमें फिर उसके बाद रैम साइकिल आती है और पेशेंट उठ जाता है बाद में। पेशेंट क्या, हम उठ जाते हैं बाद में, राइट? ओ देयर आर 2 मोर, सॉरी, मेरा ख्याल था खत्म हो गए। करने ये 2 और कि बस चलें? Yes, sir. अच्छा, a sleep study shows high amplitude low frequency delta waves. The patient is difficult to arouse and there is no dreaming or eye movement activity. Patient is difficult to arouse and there is no dreaming or eye movement activity. What is the next most likely stage in normal progression? REM. Absolutely right. Kya baat hai. Very good. A 40-year-old man is in a sleep study. He is currently in REM sleep with rapid eye movement, skeletal muscle atonia, and irregular respiration. Right? What is the most likely stage? Next stage. N3, N2, N1, wakefulness, REM sleep again. थोड़ा सा C. ट्रिकी है, हाँ? C. नहीं, नहीं। And स्टेज 1 जो है उसके बाद सब्सिक्वेंट साइकिल्स में स्टेज 1 में दोबारा पेशेंट नहीं जाता, सो वो स्टेज 2 में आता है, फिर 3 4 रैम, फिर 2 3 4 रैम, फिर 2 3 4 रैम। ये साइकिल्स 5 दफा रिपीट होते हैं। N1 तो एक शुरू में एक ही दफा आती। सो इसमें पेशेंट स्लीप विद रैपिड आई मूवमेंट, ही इज करंटली इन रैम स्लीप। रैम के बाद क्या आती है? N2. N2, क्योंकि N1 तो दोबारा नहीं आती ना, तो सो गया। जब वो सो गया तो N1 ने रिपीट नहीं होना। N2 3 और रैम, N2 3 रैम, और फिर वो रैम के बाद क्या आएगा? 2, सो N2 स्लीप है। ट्रिकी है, मुश्किल नहीं था। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? या सब समझ आ गया, या कुछ समझ नहीं आया? ओके, बट दिस वाज नॉट बैड। अगले टॉपिक्स बता दें फिर चलें। करना है कि नहीं करना? करना सर सर। करना है डिमेंशिया सर, डिमेंशिया क्या करना है? डिमेंशिया। डिमेंशिया है। ओके, और सिर्फ डिमेंशिया करना है या कुछ और भी करना है? डिमेंशिया के 30 सर सवाल बनने बड़े मुश्किल होने मेरे लिए। हाँ, पैराफीलियास करवा दो। पैराफीलियस, ओके, करवा देते, हो गया।
नेक्स्ट डिमेंशिया एंड पैराफीलियास। टॉपिक दोनों ना, दोनों एक्सट्रीम्स के चूज करते हो आप लोग। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड एंड एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.